Okay, so exercise 14.2, there are two questions. First one is based on effective rate of return by using this formula, and second one is based on CAGR. Okay, so first five questions are based on this. Okay, so what is effective rate of return? It is actual rate of return after considering all the parameters. For example, if I have invested 10 lakh rupees for 1 year and in a land, and for purchasing that land I have to go for some paperwork or some registry and so on. So maybe I have to invest 1 more lakh rupees for that land, for that other parameters. Okay, and if I sell that land after 1 year and I am selling it for rupees 12 lakhs, suppose. Okay, so the claimed rate of interest which was there was 20%. Okay, because I made 2 lakhs of profit uh, as per the claim. Okay, but actually I have to invest, or I have to spend 1 more lakh rupee for some other parameter. Okay, so the effective of rate of return will be only 10%. So this is what the difference between claimed rate of return and effective rate of return. Clear? Okay, so the formula to calculate effective rate of return is either this. We are representing this as ERR, or any other representation is also possible. It is 1 plus R upon 100 P whole to the power P minus 1. Another formula, I will use this formula for calculation of ERR in the question. And this formula, just R upon 100 is replaced with I, and it is I upon P whole raised to power P minus 1. Here, what is I? I is stated rate of return. What is P? P is number of compounding in a year. It will be given in question that the compounding is quarterly, half yearly, yearly, or monthly. If the compounding is monthly, then the value of P will be 12, because there will be 12 compounding in a year. If the compounding is quarterly, then the value of P will be 4. If it is half yearly, then it will be 2. And in case of yearly, P will be 1. Okay. So let's start with the question from exercise 14. Suppose for Yeah. either we have written stated slash declared RR. Yes, this is what stated or declared rate of return. For example, I have Okay. stated that rate of return was 20% in selling that land, but effectively it was 10%. So this is difference between ERR and I. Okay. So, like you gave the example of purchasing a land and then all the extra factors that are depending for registry and everything. So, the extra that we are paying, so it will be included in it. Like in this formula, all the extra payments are included. Actually, after reducing that extra payment or extra consideration, whatever the interest rate we are getting is here. Without considering that, the rate of interest is represented by I. After considering that parameter, the rate of return is represented by ERR. Okay. Yes, sir. Okay. Okay. So let's start with the question from exercise 14.2, question number 1. So question number 1 says that find the effective rate of return. So you have to find ERR is equals to question mark. Uh, which is equivalent to stated rate of return. So here the stated rate of return means I is equals to 8%, means 8 upon 100, which will be 0.08. Okay. Compounded quarterly. So it is saying that compounded quarterly. So value of P will be 4. Okay. Now write down the formula for ERR, effective rate of return. It is 1 plus I upon P whole raised to power P minus 1. Okay. So it will be 1 plus 0.08 upon 4 whole raised to power 4 minus 1. Correct. Further, it will be 1 plus 0.02 whole raised to power 4 minus 1. And further, we can write it as 1.02
whole raised to power 4 minus 1. Now this value is given in question. 1.02 whole raised to power 4. It is 1.0824. 1.0824 minus 1. So you will get the value of ERR as 8 0.0824. Now it is rate of return, so we will represent it in percentage. So the value of ERR will be 8.24%. That's it. Is it clear, Chevy? Yes, sir. Okay. Ha, पेज नंबर 696, ये आपके सिलेबस में है। हाँ, ओके। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न हम लोग कर रहे हैं। अनुश्री, ये फॉर्मूला है उसका, मैं एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग अभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन पढ़ना एक बार अनुश्री। Okay, declared rate of return. So here I is declared rate of return or stated rate of return. Declared RR you have to find. Okay. और क्या दियो? Compounded semi-annually. So P is number of compounding in a year. In a year. So P की वैल्यू यहाँ पर semi-annually मतलब क्या है? 2 है. Okay. और क्या बोल रहा है? 6%. Effective rate of return. So ERR is equals to 6%. So all the data is given to you. ERR is equals to 0.06. ये declared rate of return क्वेश्चन में बोल रहा है ना, P is equals to 2, I is equals to question mark. Clear? So फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, ERR के प्लेस पे 0.06, 1 प्लस I अपॉन P के प्लेस पे 2 होल रेज टू पावर 2 माइनस 1. क्लियर? ये 1 इधर जाएगा, 1.06 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। फर्दर यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, सो 1.06 टू दी पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई अपॉन 2. क्लियर हुआ यहाँ तक? ये वाली वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.0296 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई अपॉन 2. ये 1 इधर से आएगा, ये माइनस होगा, तो 0.0296 इंटू 2 कर दो, यू विल गेट आई. सो आई इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? Yes. So in percentage, it is 5.92%. Okay. This is your stated or declared rate of return. Clear? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद चैप्टर 2 इनइक्वालिटी वगैरह कुछ कुछ चीजें ना उसमें, ये हटा दो, मैं हो गया तो। क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना अनुश्री। ERR क्वेश्चन मार्क लिखते चलो, ठीक। R is equals to 12% means 0.12. कंपाउंडेड फर्स्ट केस में क्या लिखा है? सेमी एनुअली, सो P is equal to 2. सेकेंड क्या लिखा है? P is equals to 4. थर्ड मंथली, सो P is equals to 12. करेक्ट? हाँ, ओके। कंटिन्यूसली भी है क्या? ओके, हाँ, कंटिन्यूसली। इसका फॉर्मूला मैंने नहीं बताया, ठीक है, ओके। फर्स्ट सेकंड सॉल्व करो, फिर उसके बाद फर्स्ट और थर्ड सॉल्व कर लो, ठीक है। सेकंड तो सिमिलर है, बन जाएगा।
फॉर्मूला तो क्लियर है, ई So आर the आर इज, two formulas that we wrote initially, both of them are same. yes, both of them are same, just one is in terms of r and other is in terms of I. No problem with that. क्या बोल रहे हो? हाँ, 12.36%। हाँ, फर्स्ट वाला बन गया शैवी, फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व। Yes, ma'am. 12.36%, okay, now the fourth one. फोर्थ नहीं, थर्ड बोल रहा हूँ ना मैं, थर्ड। ये 1.1 होल रेस टू पावर 12 माइनस 1 आया ना, ये कितना आ रहा है? 1.1 की पावर 12 कितना दिया हुआ है? अच्छा, 1.01, ओके। हाँ, कितना आ रहा है ये? 68 minus 1, it means 0.1268, so 12.68%. Okay, Chevy, is it completed by you? Yes, sir, done. ओके, अब यहाँ पर ध्यान देना, इसका मैंने फॉर्मूला आप लोगों को लिखाया नहीं था, कंटिन्यूअसली का। ओके, अगर कभी भी नंबर ऑफ कंपाउंडिंग आपको मेंशन ना हो, ये कंटिन्यूअसली हो, तो इनफाइनाइट कंपाउंडिंग कंसीडर करते, और उस केस में ईआरआर का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वो होता है ई रेस टू पावर आई, ई रेस टू पावर आई -1, ये होता है फॉर्मूला। इसको नोट डाउन कर लेना। If the compounding is continuously, then this formula will be used. Okay. So here ERR is equals to I is 0.12 minus 1. So the value of e raised to power 0.12 is given in question. Check. क्या है इसकी वैल्यू? 1.1275 minus 1 means 0.1275, or we can write it as 12.75 percentage. Okay, so starting में जहां पर मैंने ये फॉर्मूले लिखाए थे ना, उसमें ये नोट डाउन कर लेना। यहां पर ई आर आर is equals to e raised to power I minus 1 for continuous compounding, for continuous compounding. ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 4। Mrs. Renu has two investment options, 8.4% per annum compounded monthly and 8.5% per annum compounded semi-annually. So two cases are given, case 1 and case 2. केस 1 में I की वैल्यू कितनी है? 0. हाँ, उसको पॉइंट में लिख रहा हूँ, 0.084, और सेकेंड केस में I की वैल्यू है 0.085। ओके,
केस वन में नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पर ईयर कितना है? 12 मंथली कंपाउंडिंग है, और इसमें सेमी एनुअली है ना, तो 2। अब इसके बाद पूछ रहा है विच ऑप्शन इज बेटर फॉर मिसेस रेनू, तो कौन सा ऑप्शन बेटर है? यस, दोनों का ईआरआर कैलकुलेट करना है, जिसका ईआरआर ज्यादा है वो, उसमें इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, तो ईआरआर कैलकुलेट करेंगे दोनों का। हाँ हाँ, जीरो एट सेवन थ्री अपॉन 12 नहीं, अपॉन 2 आएगा ना। वैसे अगर ये दिया हुआ तो आपको कैलकुलेशन और कम करना पड़ेगा, ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। आपको क्वेश्चन में दिया मतलब पता ही यही आना है, 1.0425 टू द पावर 2। You can directly write the answer also, no, that is given in the chat यस already. यस, एक्चुअली these type of questions will be asked for 1 mark only. 1.06086 minus 1, so it will be 0.0868, so percentage will be 86.8 sorry, 8.68%. So which option is better? The first option is better. भले यहाँ पर ये रेट ऑफ रिटर्न जो क्लेम्ड है वो इसमें ज्यादा है, इसमें इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, बट वो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न पता चलेगा। ओके, So which one will be the better one? This. द फर्स्ट वन, बिकॉज द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इज बेटर इन दिस केस। ओके, So like it is greater than compared to case 2. So we have to prefer the less one or the higher percentage value for I. the higher one, because this rate, effective rate of return, this is this is more, so this investment option is better as compared to this. Yes. Okay, okay, now solve question number 5, last question from this category. I think question number 5 is also same, just check where I think you can solve this question, or if you closely look at the data given in question, you can easily find out the percentage ERR in the first case. Look, 1.04 whole square, the value of this is 1.0816, correct? So in this case, the effective rate of return will be 8.16%, correct? Whereas in the second case, as per the data given, the effective rate of return will be 7.71%, correct? Because 1.0771 is given to you. So obviously the first effective rate of return is better. हाँ, मैं बता रहा हूं अभी, ये सॉल्व कर लेना ये चीज, ठीक है? Shall we clear? So we can leave this question, question 5, Yes. and let's move to the next category, that is CAGR. Okay, so write the heading CAGR. CAGR, that is compounded annual growth rate. Compounded annual growth rate.
हाँ, नैना मैसेज की थी कि आज रिकॉर्ड करने के लिए कहीं बाहर जा रही है। ओके, सो CAGR कैलकुलेशन कैसे होता है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। CAGR करेंगे ना इसके बाद, FV अपॉन PV होल रेस टू पावर 1/n-1। ओके, यहां पर टर्म्स जो है, FV इज फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनल वैल्यू। PV इज प्रेजेंट वैल्यू और you can also consider as investment value. N is number of years. Okay, so this formula is used to calculate CAGR. CAGR is an important measure to evaluate the company's return, its performance, and many other ways. So, how and why CAGR used? You can see this in page number 696 in the top. You can see the use of annual compounding growth rate. Okay, so you can check out the theoretical part of this. Now let's start with the questions. So question number 6. Question number 6. So क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, अनुश्री पढ़ना। Okay, so Mrs. Vandana invested how much amount? वहां पर रखा हूं बुक में, टेबल ऊपर, ठीक है, 35,000. So the present value PV is equals to rupees 35,000 or her investment is rupees 35,000. Okay. Okay, now understand this situation. He's reinvesting the same amount on the same company. So this is what compounding is happening. Okay. Further. So this is final value or future value, that is rupees 50,000, correct? 56,000. Okay. So this is final or future value. Okay. And how many years? 5 years. So N is equals to 5. Okay. CAGR is equals to question mark. So use this formula. So CAGR is equals to, now the future value is 56,000 divided by current value or present value is 35,000 whole raised to power 1 upon 5 minus 1. Clear? अब ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी हुई होंगी, जैसे ये 56/35 है ना, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ था ना, वैसे ये वैल्यू भी दी होगी। 56 डिवाइडेड बाय 35, ये करने पे आएगा 1.6। सो 1.6 टू द पावर 1/5, ये वैल्यू आपको एग्जाम में दी होगी। इसमें नहीं दी है लेकिन उसमें देगा, उसके बिना आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। इसको निकालने का ये वाला तरीका आप कोई अप्लाई नहीं कर सकते। स्क्वायर रूट तक आप कर सकते, ये वाला क्यूब रूट और फिफ्थ रूट बिना दिए आप नहीं कर सकते सॉल्व, ठीक है, वो 1 घंटे ले लेंगे उसमें तो, ठीक है। सो ये वाला वैल्यू जो आएगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1.6 रेज टू पावर 1/5। आप चाहो तो बुक में लिखना है, बुक में लिख लो, अगर बाद में आप स्टडी करोगे तो उसको, तो इस पूरे की वैल्यू जो आएगी वो ये Which आएगी। values are at the back of the book also? I think these values are not in book. I have not checked that, but it will be provided in your exam. Yes, sir. Okay. So 1.098 minus 1, so it will be 0.098. And if you're writing in percentage, so it will be 9.8%. Correct? Okay. So let's move to the next question, question number 7. हटा दूं ये? Question number 7. Question number 7 में क्या लिखा हुआ है? Mr. Mohan invested rupees 5,000 in a fund at the beginning of 2018. So the present value he invested is rupees 5,000. Okay. At the beginning,
of 2018. Okay. Further, by the end of 2018, his investment was worth rupees to 9,000. Next year, market crashed and he lost 3,000 and ending up with rupees 6,000 at the end of 2019. Next year in 2020, he gained rupees 4,500 and ending up with 10,500 at the year end. सो ये सारे डेटा से हमको कोई मतलब नहीं है. हमको जो एंड वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू और फाइनल वैल्यू, उससे मतलब है. तो फाइनल वैल्यू जो उसमें बता रहा है वो कितना बता रहा है? ₹10,500. बाकी जो भी बीच में फ्लक्चुएशन हुआ उससे कोई मैटर नहीं करता है. क्लियर? Okay, so the final value is 10,500 and this value is at the end of 2020. So end of year 2020, correct? So the next thing you need is N. So N can be determined by these 2 years. So beginning of 1918 to end of 18, it will be 1 year. Okay, 19 will be considered as second year, 20 will be considered as third year. So the value of N will be 3. Clear? Now CAGR is equals to FV upon PV whole raised to power 1 upon N minus 1. So here 105 divided by 50, 2.1. Yes, so it is 2.1 raised to power 1 by 3 minus 1, and the power 1 by 3 will be 1.2805 minus 1. So this value will be 1.2805. And further you will get 0.2805. And in percentage, we can write CAGR as 28.05%. That's it. Okay. Now let's move to the next question, question number 8. Question number 8 padna, Anushri. Okay, so present value is rupees 10,000. Okay. Okay. And for the next financial year, it grew to 13,800. And on March 31st, 2016, ended up with rupees 18,000. So that 18,000 is our future value. Okay. Now calculate, check what is n number of years. 4 years हो रहा है ना. 12 to 13 1, 13 to 14 2, 14 to 15, 15 to 16. Yes, 4 years. So n is equals to 4. Correct. Okay. अब solve करो, formula लगाओ CAGR का. CAGR is equals to 18,000 divided by 10,000 whole raised to power 1 by 4 minus 1. So it is 1.8 raised to power 1 by 4 minus 1. Correct? So 1.8 to the power 1 by 4 will be 1.158 minus 1. So it will be 0.1582. In percentage, it will be 15.82%. Okay. Now for question number 9. Read question number 9 and write all the data.
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 चेकआउट कर लिया सारे डेटा, क्या क्या है बताओ। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? ओके, पीवी इज इक्वल्स टू 10,000, एफवी, यस, फ्यूचर वैल्यू इज 9,400, एन इज इक्वल्स टू 4। ओके, एक मिनट, एन इज इक्वल्स टू 4 कैसे? नहीं, एन इज इक्वल्स टू 3 होगा ना, वो जीरो लिखा है ना, मतलब वो स्टार्ट है उसका। हाँ, तो वो, तो जब उसने बिगिन किया वो जीरो ईयर है। जैसे मान लो अभी 2020 मैंने आज बिगिन किया, तो आज जीरो ईयर कंसीडर होगा। आफ्टर 1 ईयर द अमाउंट इज 13,000, आफ्टर 2 ईयर इट इज 11, एंड आफ्टर 3 ईयर इट इज 9,400। सो द वैल्यू ऑफ एन विल बी 3। Shabi, is it clear? So, but like in question number 7, we consider 2018 also, then 2019, and then 2020. So we wrote n is equals to 3. Okay, in question number 17, look, 7. Okay, question number 7. So question number 7, we are starting with which year? Beginning, beginning of 2018. Okay, now this is end of 18, or we can say beginning of 19. Now this is end of 19, or we consider it as beginning of 20, correct? Now the next is end of 20. Okay, so how much year? This span is our 1 year, this is 2 year, and this is our 3 year, correct? ऐसा ही हमने Yes, sir. कंसीडर किया था। ओके, इन अ सिमिलर वे, जस्ट कंसीडर by this timeline. Now consider this is our present time, 0. Okay, the investment is 10,000. After 1 year it became something else, after 2 year, after 3 year. So just consider the time, 1 year, 2 year, and 3 year. If you have any doubt, you can use this timeline. Okay. So further you can solve this question, no problem with this. Okay, but just one thing, the number will be negative because the amount is decreasing. So here the future value is 94,000, and this value will be approximately 0. क्या आएगा, इसको देखना पड़ेगा कैलकुलेट करके ही। 0.94 टू दी पावर 1/3। नहीं, वो तो माइनस करने के बाद आएगी ना, 0.9795 -1, and when you subtract 1 from this, you will get minus 0.02041. If you write in percentage, minus 2.041 percentage. Okay. डिक्रीज हो रहा है, फ्यूचर वैल्यू देखो ना, कम हो गई। क्लियर? हटा दो ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। चेक करो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है। Mr. Kumar invested 20,000 in 2014 for 5 years. So present value is 20,000 and number of year is 5. If the CAGR of investment turn CAGR is given, कितना दिया हुआ है CAGR? 11 point कितना है? 84% ना, 0.1184. Okay. Find the future value, end balance or future value. So use same formula. यहां तक क्लियर ना? यहां तक हो गया?
ओके, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया, तो ये 0.1184, इधर पे 1 इधर आ जाएगा, तो +1 इज इक्वल्स टू एफ वी अपॉन पी वी, प्रीवियस वैल्यू इज 20,000, होल रेस टू पावर 1/5, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 1.1184, पूरे की पावर 5 कर देते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ वी अपॉन 20,000। क्लियर हुआ ये चीज? पावर 1/5 को रिमूव करने के लिए होल टू दी पावर 5 कर दिया है। क्लियर? अब ये वाली वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1.11, मतलब दी हुई होनी चाहिए क्वेश्चन में, 1.1184 raised to power 5. So this value will be 1.749, or we can consider 1.75. Consider it as 1.75. Okay, that is equals to FV upon 20,000. Now multiply this 20,000 with 1.75. So 20,000 in, yes, 35,000. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 एक बार पढ़ना, क्या लिखा है? सो नंबर ऑफ शेयर उसने कितने परचेस किए? 200। किस प्राइस पे परचेस किए? ₹100 पर शेयर। हाँ, सो हिज फ्यूचर वैल्यू वाज ₹30,000। ओके, CAGR is 0.2247। ओके, ओके, number of shares equals to question mark. So future value is given to you, CAGR is given to you. Now calculate present value using this. Okay, so PV is equals to 200 into 100. So PV will be 20,000. And you have to calculate N. Okay, so use that formula, which is CAGR is equals to FV upon PV. So then what was the use of like this purchasing shares? Like where will be putting these values? Uh, Actually, this price and number of shares. Yes, ma'am. Actually, this is our investment. If we are buying a share at this rate, ₹100 per share, and we have purchased a quantity of 200, then the total investment will be our this present value or the invested value. Clear? Yes, ma'am. Hmm. यहाँ तक क्लियर हो गया ना सबको, ये वाले स्टेप तक? अब इसके बाद क्या करेंगे? Whole, we will take whole raised to power 10 both the side. So in the left hand side it will be 1.2247 whole raised to power n, it will be 1.5। क्लियर? अब देखो, इसमें आपको वैल्यू दी होगी, लॉग में दी होगी, क्योंकि इसके बाद अगर इसको सॉल्व करना है ना, तो लॉग लेना पड़ेगा आपको। सो वी विल टेक लॉग बोथ द साइड। सो इट इज लॉग 1.2247 होल रेस्ट टू पावर n इज इक्वल्स टू लॉग 1.5। मतलब हो सकता है इसकी वैल्यू दे दे या लॉग की वैल्यू, लॉग दिया होगा मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली। अब लॉग की प्रॉपर्टी से n जो है ये सामने आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, n log 1.2247 is equals to log 1.5। ओके, n इसकी वैल्यू जो आएगी अप्रोक्सीमेटली 0 पॉइंट, मेरे ख्याल से 204 कुछ आता है, log 1.2247
It is, yes, 0.202, and log 1.5 is approximately 0.404. So when you divide, you will get n is equals to 2. Okay. Shemi, is it clear? Yes, sir. Okay. Now let's start the depreciation. अरे 10 मिनट में हो जाएगा पूरा. So can you please move back to previous slide? The last step was left. हाँ, ये लास्ट टॉपिक है. 14.3, 14.4 is deleted. Yes, sir. Done. Okay. Only 14.3 is there and only 5 questions are there. So maximum it will take 10 to 15 minutes to complete this. Okay. Okay. सो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है. मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक फोन परचेस किया 1 लाख का, ओके, और 1 लाख का फोन परचेस किया और मैंने उसको 5 इयर्स तक यूज किया, और यूज करने के बाद उस फोन, वो स्क्रैप हो गया, वो वर्क नहीं कर रहा है, तो उस स्क्रैप को, उस खराब फोन को मैं सेल करता हूँ, और सपोज वो 10,000 में सेल हो जाता है. ठीक है. तो जो सी है, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट थी, वो क्या थी? 1 लाख थी. ठीक है. जो स्क्रैप वैल्यू है, जो स्क्रैप वैल्यू, जब वो फोन खराब हो गया तो 10,000 हो गया. एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स मैंने कितने यूज किए? 5 इयर्स के लिए यूज की. सो 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 5. सो 90,000 अपॉन 5, वॉट एवर इट विल बी. 90,000 माइनस 5 मतलब कितना होगा? आई थिंक 18, 18,000. तो 18,000 पर ईयर से वो डेप्रिशिएट हुआ. दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस. ओके. हर साल 18,000 डेप्रिसिएशन हुआ. अब डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन के अलग अलग मेथड्स है. एक्चुअली दिस मेथड इज कॉल्ड linear method. If you check in page number 697, 697, there are different methods for computing depreciation, but only one method, that is linear method, is in your syllabus, and this is what the linear method is. Okay. बाकी हाँ, मतलब अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस में नहीं है. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 14.3. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या, एक बार पढ़ना अनुश्री. So C is equals to rupees 25,000. Okay. N is equals to 8. Scrap value S is equals to 0. So you have to calculate D, depreciation. So simply use that formula which we had discussed. So D is equals to 25,000
minus 0 divided by 8. So D is equals to 25,000 by 8. 8 threes are 24. फिर ये हो जाएगा 1, 8 ones are 8, 8 twos are 16, 8 fives are. So I think it is 3,125. Okay. This is what annual depreciation. Now let's move to the next question. Question number 2. So क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में अनुश्री पढ़ना. हम्म 13 years, 4,000. So D is equals to 30,000 minus 4,000 divided by 13. So it is 26,000 upon 13. So D is equals to 2,000 per year. Now let's start next question. Question number 3. Hmm. N is equals to 8. C is equals to 80,000. So D is equals to given a rupees 9,000. Scrap value is equals to question mark. Okay. So use same formula 9,000. Now the depreciation is given. Cost value is also given 80,000 minus scrap value we have to determine divided by 8. So cross multiply this 8. 8 nines are 72. So it is 72,000. Clear? Now the next question, question number 4. Uh, Cost value is 9 lakh. 2.7 lakh. D is 70,000. N is equals to question mark. मैं सारे डेटा लैक्स में ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, चलेगा. Okay, so 70,000 is 0.7 lakh. Okay, so 0.7 is equals to 9 minus 2.7 divided by n. So 0.7 n is equals to, this difference will be 6.3. Okay. So n is equals to 6.3 divided by 0.7. So 63 upon 7, 7 nines are. So n is equals to 9. Clear? Okay, next question. Question number 5. Last question है ना? 22,500. Hmm. 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 So these will be asked for 1 marks. Yes.
हाँ तो और क्या. ओके, so that's it. Chapter 14 is now completed. 14.4 is deleted from your syllabus. Now, आफ्टर दिस, ओके, ध्यान देना एक बार. मैं भी अब कुछ दिन आउट ऑफ स्टेशन हूँ, ठीक है. सो आई विल कंडक्ट टेस्ट. टेस्ट में यहाँ पर प्लान कर देता हूँ, ठीक है. हर चैप्टर का टेस्ट कर लेंगे, सो आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा और शॉर्ट नोट्स भी बनते जाएंगे. सो अभी जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स ना, लाइक स्टैटिस्टिक्स का एक हो जाएगा, ठीक है. फिर उसके बाद ये वाला चैप्टर हो गया. इसके पहले एक और चैप्टर हमने किया था. तो सारे चैप्टर्स के एक एक टेस्ट कर लूंगा. ओके, एमसीक्यू बेस्ड एंड दैट कैलकुलेशन बेस्ड, दोनों टाइप के थ्योरेटिकल वगैरह मिक्स करके. ओके, फिर उसके बाद आगे रिज्यूम करेंगे हम क्लासेस 1 जनवरी से, क्योंकि मैं 10 डेज के लिए बाहर हूँ. ओके, तो 1 जनवरी से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी करेंगे एंड उसके बाद फिर पूरा कैलकुलस रिवाइज करेंगे. ओके, बिकॉज कैलकुलस में तुम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम है और उसका वेटेज भी अच्छा खासा है. कब है? 9 to 18. ठीक है, वो सब प्लान आउट कर लेना, देख लेना उसको. बट आप लोगों के फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक डेट शीट भी आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली. और एग्जाम्स जो होंगे 25 फेब के बाद स्टार्ट होंगे. ओके, सो वी विल हैव मोर देन 1 मंथ, 1.5 month टू रिवाइज ऑल दिस थिंग्स. ओके, हाँ मैं कर लूंगा उसके बाद. फिर उसके बाद मेरी कई बैच